Okay. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही रियाज में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। जी आ रही ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتरब। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब सबसे बड़ा करम वाला है जिसने कलम से सिखाया, इंसान को सिखाया जो वो जानता ना था। हरगिज़ नहीं, बेशक आदमी सरकश हो जाता है जबकि अपने आप को बागी पाता है, अपने आप को गनी पाता है। बेशक आपके रब ही की तरफ लौट कर जाना है। या आपने उसको देखा जो मना करता है एक बंदे को जबकि वो नमाज पढ़ता है? भला देखो तो सही अगर वो राह पर होता या परहेजगारी सिखाता। भला देखो तो सही अगर उसने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया। तो क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए। अगर वो बाज ना आया तो हम पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे। पेशानी झूठी खताकार है, बस वो अपने मजलिसों वालों को बुला ले, हम भी मुवक्किलीन दोज़ख को बुला लेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं चाहिए। आप उसका कहा ना मानिए और सजदा कीजिए और खुर्ब हासिल कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह आदिल भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ऑनलाइन मीट स्टार्ट होने वाला है हायर एजुकेशन एकेडमिक एक्सेलेंस पे। हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर वजीर महमूद साहब, आंध्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और टोटल 40 इयर्स ऑफ टीचिंग सर्विस है सर की, और बहुत सारे अचीवमेंट्स है सर की। 1986 से है ना टीचिंग फील्ड पे है सर, और एसोसिएट प्रोफेसर से स्टार्ट करिए डीन भी थे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ जियो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और 2012 से अभी तक प्रोफेसर से प्रोफेसर जैसा कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और बहुत सारे थीसिस के राइटिंग पे भी थे सर, और डॉक्टरल थीसिस के गाइड थे तकरीबन 2013 से लेते हुए अभी 2020 भी बहुत सारे थीसिस को गाइड करे थे। और बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला था ऑनर्स एंड अवार्ड्स में 2023, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड आंध्र यूनिवर्सिटी। तो ये था मुख्तसर तारुफ सर का। अभी हम लोग शुरू करेंगे। मैं दावत देता हूँ डॉक्टर वजीर महमूद साहब, हायर एजुकेशन एकेडमिक एक्सेलेंस पे बात रखिए। जज़ाकल्लाहुल खैरुन। रियाज साहब ना बात करे सो भी। जी सर। अच्छा अच्छा। At the outset, I profusely thank your team, every one of your team, for inviting me to share
a little from my experience. ऐसा कुछ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं देखा हूँ, जाना हूँ और समझा हूँ, उसमें से थोड़ा बहुत I want to share with my young friends, so that it can be helpful for them to plan for their future tomorrow. मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा ऊंदा सा एक प्लान बना लें और उस पर मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपके साथ साथ अपना कौम को, अपना सोसाइटी को भी आगे लेकर जाएं। तो ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा इरादा है, मेरा खुशी है और मेरा दुआ भी है सबके लिए। सो जो भी मैंने शॉर्ट टाइम में ऐसा आजकल जो है मैं दो रिसर्च स्कॉलर्स का थीसिस फाइनलाइजेशन में हूँ। वो मेरे साथ ऑफिस में भी काम कर रहे हैं और घर पे भी आके काम कर रहे हैं रात दिन। तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा मैं वो इसमें लपेटे में आ गया। तो आई कुड जस्ट स्पेंड ओनली लिटिल टाइम on this preparation of my speech to you. तो थोड़ा बेयर करना पड़ता आपको इसमें, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। सो दिस इज माय टॉपिक, हायर एजुकेशन एकेडमिक एक्सेलेंस। ये बड़ा ओशन है। तो मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावरिंग, वी आर टॉकिंग ऑन एम्पावरिंग यूथ फॉर नॉलेज, स्किल्स एंड सक्सेस। आज के ज़माने में ये बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बूढ़ा, देहाती या अर्बन वाला कोई भी है, एवरीबडी नो आई हैव कम टू रियलाइज, they have to realize that education is the best means of growing, coming up in life. मेरे जो ये 40 साल के करियर में मैंने क्या देखा, और मेरे पढ़ाई के ज़माने में भी है, ये पढ़ाई जो है, जो बच्चा मेहनत करता, स्कॉलरशिप या कुछ गवर्नमेंट में सीट आता तो जाके पढ़ता था। तो बहुत कम लोग ऐसा पढ़ते थे। बाद में जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आने के बाद है, तो पेरेंट्स है ना अपना प्रॉपर्टी बेच के भी उनको फीस बन के बच्चों को पढ़ाना, और बच्चे भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे पोजीशंस में आए हैं और वो फैमिलीज भी ग्रो करे हैं। तो ये मैं नियरली 40 ईयर से देख रहा हूँ। मगर अफसोस की बात क्या है, आई हैव सीन वेरी लेस पीपल फ्रॉम माय कम्युनिटी। मगर थैंक्स टू डॉक्टर वैएसआर चक्रवर्ती, जिसने 4% रिजर्वेशन शुरू किया था मुसलमानों के लिए, जब से लेके जो है बीन सीइंग मुस्लिम स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर कॉलेजेस। ये कैसा जाहिर होता है, तो व्हेन दीज 4% हेल्प अवर मुस्लिम गर्ल्स एंड बॉयज आल्सो। बॉयज का तो पता नहीं चलता दूर से वो कौन है, मगर लड़की जब बुरखे में आती है तो पता चलता। तो कैंपस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई सी अ फ्यू गर्ल्स clad in burqa walking across the campus from their department to classrooms like that. I have been watching that. Alhamdulillah, I am very happy. मगर इससे और हम आप ऊपर आना है। तो just let me, this is not just for our community, based on my experience with the students of the present generation. As Mr. Riaz told, I've been teaching for the past 40 years. I have completed 40 academic years. Uh, so 40 academic years में I have seen a very big change, very big change. Unimaginably, the the approach of the students changed from a very hardworking, sincere, focused approach to very casual, carefree, uh, little responsibility and no responsibility towards their future. इतना बड़ा चेंज मैंने देखा।
तो अब भी है ना, I have 90 plus students in my class, out of which 60 are through MSET. Even the students coming through MSET also are like that only. इसके reasons काफी reasons है, तो वो जितना हो सकता मैं उतना डिस्कस करता हूँ, so that my audience know, I expect, I believe that they are all youth, maybe already in a good position in the universities, but through them, I want to reach the youth who need this uh, guidance. So I hope all the audience now presently listening to me would share whatever that is worth with your in your family or relations or friend circle, so as to make the youth understand my point. So let us see. अगर ऑडियंस मेरे साथ इंटरेक्ट करे तो बहुत अच्छा रहता। अगर एक दोनों अगर है वहां पे डिस्कस करना चाहते तो अगर ये ऑफलाइन होता तो आई वुड हैव आस्क्ड माय क्वेश्चंस फेस टू फेस, बिकॉज इज डिस्कशन, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन और एनी स्पीच अदर देन पॉलिटिकल स्पीच एकेडमिक एनवायरनमेंट में जो भी लेक्चर है, इट इज a teaching learning process, we call it. Teaching learning process is a combined participation of the person who speaks on the dais and the students on the other side listening to him. So teaching alone is a failure, and listening is not possible without teaching. So teaching learning is a single process. So अगर कोई है तो if you cannot don't want to interact now, it's okay. But I just want to put this question: who wants to achieve excellence? How many of you want to achieve something extraordinary in life? ये क्वेश्चन अपने आप को डाल दीजिए और अपने लोगों से पूछिए इरादा क्या है। बस जी, जिंदगी में कभी भी इंसान को एक कुछ तो भी बनना है, तो इरादा बनाना है पहला। He should have an aim. Based on that aim, what is required to achieve that aim, we can uh, I mean, reach the sources, then work on that, then achieve the goals. So this is very important. So every student, every young person, girl ho, boy ho, from the beginning, मैंने देखो image में I did not give the youth picture of youth. मैंने बच्चों को रखा वहां पे। That means your thinking should start from that level only. In my childhood, we did not have that much exposure when I was of that age. I only came to know about what I have to do after I got through the 10th class and when I was about to join. That was also almost decided by my relatives and all that based on my ability. हम चारों भाइयों थे. So among the four, I was no encouraged to do engineering. So based on the what we call the talent or say abilities. आजकल ऐसा नहीं है. Every parent who are having one or two kids, even before they are coming in the womb, they are planning that my son will become doctor, my son will become engineer, or daughter will become engineer, like that. So actually, no, it is the duty of the child to think about it. The passion, towards the passion. One should have a passion. So passion is an agent which drives the person towards the goal. तो मैंने यहाँ पे बच्चों का फोटो रखा है. That means this thinking should start from that age. अभी कमिंग टू हमें कुरान के रोशनी में भी देखें अगर, तो आप सबको पता है, you all know, you all are well educated. So ours is a unique religion which is emphasizing on the education. जैसा आपने अभी तिलावत की थी कुरान शरीफ का जो है ना आयत पढ़ के, तो पहला जो बात
खुदा से अल्लाह सुब्हान तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयत, इक़रा, पढ़, learn, know. तो our religion started with emphasizing on the education, learning, knowing, knowledge seeking. So every Muslim by default has been commanded by Allah to seek knowledge. It is the duty of every Muslim who are before us, who are now, who are going to come after us. तो ये भी हम जानना है, एज ए मुसलमान है, ये अपना ड्यूटी है. तो then what is that I'm going to highlight here is a significance of higher education in modern India, not confining to modern India. As an Indian, the whole world is open to you wherever you go. What is the importance of higher education? Understanding academic excellence. Then what are the challenges we have? Then what are the strategies for achieving academic excellence? I may not see the time will not be sufficient for me to discuss a mukammal discussion karna bole to this short time won't be enough, but I will give the highlights because I have to also keep you, you know, in a good humor. I should not bore you also. अगर फेस टू फेस होता तो बॉडी लैंग्वेज के जरिए आई कुड हैव kept you in a good humor also. But here online bole to I cannot see you all, but I have to imagine you, and everything is dark for me. But I hope that you all are listening to me with patience and also attention. So thought about success stories, not to dwell upon them, but just to remind you of the success stories of Muslims and others to motivate others. तो ऐसा कुछ मैंने, है ना, स्लाइड्स बनाया हूँ. शायद वो प्रॉपर ऑर्डर में होंगे या ना होंगे, बट आई कैन डिस्कस व्हाट एवर दैट आई वांटेड. आई ट्राई टू मैनेज विद दैट. तो सी हियर आल्सो earlier you know even थोड़े पाबंदियां हैं हमारे कौम में, तो पाबंदी को अपनाते हुए भी हम एजुकेशन आगे ले जा सकते. So I don't want to discuss much deeper into that, but my pictures will reveal that. So nothing can stop you. Religion never stops you, but how you take religion, implement within you while seeking the knowledge of the world, uh, in addition to the दीनी knowledge. तो ये आप जरूर कर सकते हैं, और इसके लिए हर दरवाजा खुला है आपके लिए, इस्लाम के दायरे में रहते हैं. So role of higher education, personal and societal growth, personal development, innovation, economic growth, social cohesion. So here you may think that having taught for 40 years in the universities, where I have people from the entire cross section of the society, now I am specifically addressing to the Muslim youth. See, what is the justification I have? Here, justification that I have here is society has a different communities. Communities is built by, society is built by different communities. जैसा you take care of a family, जैसा कि मैंने, I see, I have family, I have kids. What is my first duty? I have to take care of my family, my parents, my wife, my children. I have to feed them, clothe them, educate them, make them good citizens, a responsible part of the society. Otherwise, if I neglect them for some bad habits or something other avocations, my children may become tomorrow, you know, risk to the society, or burden to the society, a liability to the family. So what is my first duty? Is to take care of my family. In this analogy to this, every community, people of every community think like this. After taking care of their family, while taking care of their family, they also have to take care of their community. ऐसा ही मेरा भी, if every community tries like that, if all the communities are developing, the society is developing, nation is developing,
the whole world is happy. So this is my responsibility to focus on my community also. I'm not doing anything wrong. I'm doing, in fact, the wonderful thing, best thing. So this is the justification. So everybody can think like that. So अभी क्या है? So it will so ये तो जैसा कि social cohesion. See what is that valued in the society? We all know that पैसा है तो इज्जत है, अगर दौलत नहीं है तो इज्जत नहीं. नहीं, उसके अलावा भी इल्म है तो इज्जत है, इल्म है तो दौलत के बिना भी इज्जत है, इल्म है तो दौलत के बिना और बैकग्राउंड के बिना सब पॉसिबल है. सो इल्म है वेरी इंपॉर्टेंट. So opportunities unlocked through career advancement, leadership development, social mobility, like that. I want to go to the important points, so just I'm giving a tour through this one. Okay. I hope you are seeing my slides without any difficulty. है ना? जी. I'll come back to all those slides again. So let us see what is higher education, understanding higher education. So you all know very well that education beyond secondary school, that is studying in college, university, or any other professional training. अगर आप स्किल डेवलपमेंट के लिए गए या कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया तो टेक्नोलॉजी के अंदर आप ट्रेनिंग के लिए गए, इज ऑल हायर एजुकेशन ओनली वी कॉल इट. So जैसा कि my self, when I want after doing my first MTech, while doing my PhD, what happened during my work, technology changed from a manual or a kind of map, a hard copy map data to digital data. Then I did another MTech to upskill myself in digital data handling. तो कंप्यूटर पे भी ट्रेनिंग हुआ. So I did another MTech. Then I pursued my PhD. After that, again in civil engineering, again total technology totally changed. New codes have come, design methods change, software change, everything. Then I did third MTech to upskill myself. And apart from that, I used to go every year, all the universities like IITs, central institutes to upskill myself. So that has made me always a fresh and belong to the current technology. Otherwise, what I have studied 40 years ago or 30 years ago has already become obsolete. So during my journey as a professor, I'm the first student, so I'm learning it. Even today, I'm learning because this time I'm not going to university or other places. I'm learning it from YouTube and other sources. So professional training, all are come under this higher this thing. So what is meant for this specialized knowledge? You want to become a professional, medicine, or law, engineering, or management, or जो भी है. You can acquire specialized knowledge, you can do research, and you can develop critical thinking for innovation, other things. So then a foundation for a career in lifelong learning. So this is what I was saying. So it doesn't stop. Suppose you did a post-graduation or you did a PhD and you think that you are settled in life. No, you have to upgrade yourself. I told same thing to my children also. While working in India, my daughter said, she did a BTech and after working for 5 years, 6 years, then she needed to update her knowledge. She did another PG, of course, abroad.
So like that, I kept them, I encouraged them to update their knowledge through acquiring. It is not necessary that you have to go and start your PG courses again, but if it is needed, you have to do another PG, or you go to the professional trainings and do that. So now, what is the importance of a higher education? Personal development to build confidence, communication, and ability to problem solving. This is very important. What we are seeing, at least in Andhra Pradesh, all my students in Andhra University also, are other students coming to me. Though the students are very, very intelligent, uh, having a good merit, they are having, they lack in confidence. They lack in confidence. When we go to other places, conduct interviews for the recruitment or so, when we sit as a panel member in the interviews, we see vast difference between students coming from North India and the local students. Though they are short of merit requirements compared to my students or local students, their presentation is very nice. They have very good communication skills. They have a lot of confidence. Their attire is different. Okay. They see that only tells how you have dressed, with what confidence you are sitting and talking, and what is your communication. So apart from your merit, you will also have to develop these things. So I call it a personality development. Personality development is very, very important. It is not enough for you to study your books and achieve good marks in an exam. It is necessary for you to read the newspapers, the other books, listen to the speakers, experts, listen to the elders. When elders are there in your house, they are talking about some top, I mean, some any topic. You must carefully listen to them. That will build your, the database that will allow you to enhance your knowledge, confidence. So ऐसा कुछ life में we have to make certain, habits, so that way you can develop it. So obviously higher education causes personality development. That means your confidence will be increased, and communication, everything, because you meet professors, other students from other places. So, and ability, talent also improve. And it will also give a scope for career opportunities. You will have the better opportunity for better jobs and growth. Then you can also participate in innovation and leadership also. Further, if you go there, suppose you want to start an industry as an entrepreneur, you can do that. Nowadays, it is encouraged as a startup. Okay, you can take up a startup. Startup is not a new concept. When I was doing BTech, then also the government used to come small scale industry. India badly needed small scale industries. Even today, you see what are the various items you have in your house, whether it is in a drawing room, a dining table, or a kitchen, or in your study room, in your office. Most of the items are coming from China. Okay. Though we have iron ores and all those, and the iron ore is supplied for more than 100 years to Japan, where, bulk construction companies are getting steel from China because it is supplying at a cheaper rate. So, production. So, those days only, when I was studying only, the government departments like small scale industries and all that, they used to come to the engineering college and motivate the students to start small scale industries. Now they are called startup because now even software, everything has come up now. So now the term is a startup. Many students are students. Many students of my department, college, university are the CEOs now. So higher education that way is very essential.
So here you must emphasize what are the real world benefits are there apart from academic knowledge. You have to explore them. So I left a point there. Mr. Riaz, am I going in the correct route or not? जी सर। हाँ. Because I don't know what exactly you expected from me. So जो मुझे जैसा महसूस हुआ मैं बोलते बनाते चले जाना. जी ठीक है. So as I told you earlier, our religion always insists on improving our knowledge, learning, education. So what is academic excellence? So more than higher grades, the skills and knowledge and character involves a discipline, reflection, and integrity. Here I would like to tell you. You can see in the picture what I have done there. I showed the brain, and the brain is shown in the heart shape because mind and brain are said to be the same. And protecting the mind and brain. Mind bole to you can also say heart. So here it is very, very important. I want to underline this point, emphasize more, especially to my home, because I have seen a lot in my life. I have uh, seen what happened in the minority institutes, what is going on in minority institutes. Or both, I don't want to bring a negative things here, but you know, मेरा तजुर्बा बहुत सा मुझे you know मायूस कर दिया मुझे. So, but without going to that episodes that I've seen, I would only insist on few things. Let us have integrity. Anyone, Musliman बोल के नहीं, any student, I tell the same. Almost every week I spend a half an hour, 1 hour in telling about the ethics to my students, apart from this subject. Ethics are very important. It is very essential. See, पहला जीना है. To survive, we need to have skills to earn our bread. That means a knowledge. And what standard of living you want to have, it depends on your knowledge. And what kind of happiness, satisfaction you want to have, it is depending on your character. Character is very important. Character of two types. One, the character which is exhibited, okay, openly, the character not exhibited within us. But forget all these things. You just stick to our deen, Iman. So our Islam teaches about Iman. आप व्यापार करो या नौकरी करो या कुछ भी करो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, कुछ भी हो, ईमान नहीं छोड़ना चाहिए. ईमान मीन्स ईमानदारी हियर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. You live as a Muslim everywhere. What do you meant by Muslim? Is it only the beard, दाढ़ी, टोपी और कुर्ता पैजामा, यही है हमारा मुसलमान होने का दिखावा? No. This is only temporary, 5 minutes के लिए. But a long-lasting impression is there by your behavior. How you are behaving there. आप ईमानदारी पे हैं, आप है ना समझदारी, ईमानदारी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है. Islam teaches us both the things, ईमानदारी और समझदारी. We call it a common sense in English. But unfortunately, I didn't see this kind of समझदारी even in the learned scholars. Because you know, everywhere shaitan enters. जब आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, तो शैतान ज्यादा आपके पीछे रहता. तो यहां समझदारी, आप ईगो में आ गए, तो समझदारी से दूर चले जाएंगे. जब समझदारी से दूर चले गए, आप रास्ता भटक जाते. आप समझते हो कि आप रास्ते पे हैं, मगर रास्ता ऑलरेडी भटक चुका है. सो ये है, दो ईमानदारी और समझदारी दो भी है. ये कैरेक्टर से
बनता है। समझदारी कहाँ से आता है? नॉलेज से आता है। एवरीवेयर ये जायज है, नाजायज है, एट एवरी स्टेप वी हैव टू लुक इट। हाँ, see, it is very difficult for us to, you know, resist, not to yield at times certain. But at least, you must protect imandari. That is very important. So academic excellence also teaches this. But being a Muslim, you have added benefit because you are already taught about ethics, discipline, character from your childhood by your parents, by your ustad. So that is more advantage we have here. So so holistic development. यहाँ पे देखो, what is to be highlighted here? Holistic development. What is holistic development? It is not that you get a handsome degree. That's all in the life. No. Along with a handsome degree, you must get a good personality, character. ये चीजें बहुत important. So that is called holistic development. तो डिग्री के साथ आपको स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. Everywhere you show that I am the first ranker is not enough. After you are given employment or opportunity to work anywhere, if you cannot show your skill, your degree is wasted. Your degree is only for entry level. वहां से आपका performance, your performance, I am telling you, because I am in a very close association with the industries departments. Okay, as a consultant also, I am also an industrial consultant, one of the leading consultants to the various government and private bodies. Even I am a consultant to the certain international organizations also. So what I have seen is, achieving only a degree, which will be a visa for you to enter into a job, and after that you relax because you only have bookish knowledge and you secured marks, good marks. No, you must also acquire abilities, skills. Then, after once you join a company, even in a very high position, your performance is always assessed. Performance is very important. I must tell you that one of my scholar, a scientist from ISRO, I have some scientists working under my guidance. So have completed, some scientists have completed, some are still going. Those scientists which are in a very good position now are complaining even about IIT students. They're complaining even about the IIT students. They're saying that, sir, ये लोग कुछ भी काम नहीं करते, they come and अपना जिद पे अड़े रहते, काम कुछ भी नहीं करते, टाइम पास करते, चले जाते हैं. I want to get rid of them. तो क्या हुआ आपका IIT डिग्री? आपने मजाक बनाया अपना IIT डिग्री का. So performance is very important, which goes lifelong. तो इसलिए I insist on your skills, knowledge and character. So please always ये अपनाओ, discipline, integrity, ये हमेशा. कुछ भी नया नहीं है. You don't need to learn this from any other book, from library of university or any world's best university. It is already there in our what we call Quran or Hadith. That's enough. So then, to achieve the academic excellence, what are the pillars that we have here? Okay. So the keys to excellence: consistency, daily discipline, critical thinking, analyzing, okay, questioning, innovate. Okay. So questioning means किसको question करना? No, question means when you think about something, several questions will come. If it is a research, we call research questions. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग में कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, क्या करना है, कैसा करना है, कहाँ है, किधर है, कैसा है, दिस ऑल विल कम इनटू दैट. टाइम मैनेजमेंट, तो आपको है ना बैलेंस करना है, योर स्टडीज है, योर वर्क है, योर सी. जिंदगी में सिर्फ पढ़ना ही एक ही नहीं, दूसरों के साथ भी जीना है. घर का जिम्मेदारी भी होगा आपके साथ,
अपने पेरेंट्स का, दोस्त का, रिश्तेदार का, अपना हेल्थ का. So you have to strictly follow, have some proper management of your time. Then collaboration. You have to collaborate. Peer learning, mentoring, these are very important. So, you know, when I was studying my BTech, I was benefited by combined study. So my friend who wanted my association because I was good at solving problems. So कितना भी difficult problem हो, I used to solve it within no time. He saw that, but I was not that much, disciplined like my friend. He was very disciplined man. I was a less disciplined person. But I got another interesting thing for him. So he associated with me. He used to take me to his house. His mother used to feed me a lot. Okay, keep me always in a good mood. And we had a combined study. I got benefited from him, and he got benefited from me. Later on, many more joined. We always had a group work. Though sometimes I studied alone, but sometimes I joined my friends to cover up the gaps that we had, and then no, that gives a lot of communication. Sometimes we may miss certain things from the class. तो अगर आपके फ्रेंड्स के साथ है तो फ्रेंड्स विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. अरे टीचर ने ये कहा, टीचर ने कहा कि वो टेक्स्ट बुक फलाना टॉपिक पे एक्सरसाइज करो बोला, असाइनमेंट करो बोला, वो पढ़ने के लिए कहा. सो लाइक दैट you will not miss you will miss less when you are with others. Similarly, you have to interact with your teachers, professors. Never shy. If you think that going to a teacher may cause a problem, never. Going to teacher will always help you uh, learn more in a better way. And the integrity के बारे में तो already बता दिया मैंने, honesty and the ethics. So again, आपको याद कर ताजा करने के लिए, okay, मैंने फिर भी रखा. Now, what are the challenges we have? So आजकल जमाने में actually students are really having big challenges. They have a very पहला मैं in our generation, no, I was one of the 5 children. Okay, though as a learned parents, parents always insisting on good studies, but this kind of pressure I never had. Today we have either single kid, 2 kids. So since born, since they come into this world, their career, their future, their all kinds of ambitions are already fixed by their parents. So there is a more insisting on scoring very high. Abhi to we also got this coaching factories. I call them coaching factories. Earlier we had this coaching factory only intermediate. Come se kam up to 10th class, the students had some freedom. But after going to intermediate, it was like a jail for them. So everyday drilling, right from early morning to late night, drilling goes on. No student had a freedom to think about himself or herself, plan in their own way, or think even about the studies. They never had an opportunity. They never have it. So it's going on. अब क्या हुआ? This Narayana Chaitanya started a techno schools, right from LKG, IIT Foundation. So student, once they go to the school, they're, having tremendous pressure on them to score big. Every student, will not have equal ability. No, all children will not have equal ability. But parents are blind to this fact. They expect their kid to do miracles. Okay. This is very, cruel. They are being cruel unknowingly. They think that they love their kids too much, but they are very cruel. Many parents come to us every year. They come and seek our guidance.
I keep telling them, please do not insist what you want from your kid. Please ask your child what the child wants. So let them have passion for whatever they choose. So then you allow them to fulfill it. ना ऐसा नहीं होता. He will just inquire about which is the top branch, which is assuring a better placement, and he decides. I was also in admissions department, a directorate for 5 years, you know. So there, the parents accompanying for the BTech admission is very common. I had seen that. But I was shocked to see parents accompanying students coming for MTech admission also. I did not allow parents to enter into the hall. I was asking the student which specialization you want. Before the student tells that, from a small hole in the window, the parent shouts, Are, you take that instrument, that heat mass transfer specialization. Don't take machine design. The parent shouts, who himself is not an engineer, who never had been to university, engineering college, and do not know anything about mechanical engineering. He shouts at his kid to take so and so specialization. And later I saw the parents even coming for the PhD admission. So itna spoon feeding, itna jo pampering, really they're spoiling their kids. So today the students, they don't have any choice option for this, because if the parents are like that, what the student can do. So pressure to score high marks, okay, difficulty to choosing career path, lack of mentorship and guidance, and we have seen so many cases the students are committing suicide. So, so students say, please check what are the challenges you are facing. You share with your mentors or somebody whom you know, that fellow may give you some proper guidance. Go and seek their guidance. And today, it is needless to say that right from a kid to 100-year-old person, we have this problem, distraction. Internet, जब जियो ने बनाया internet free, we got addicted to the internet. Now here they're charging heavily, but we don't mind paying that. Whether it is a class or outside the class, on the road, walking on the road, crossing the road, driving the vehicle, kabhi ghar pe, when you are with the friends, when you are with the relatives, with your parents, all or everybody is engaged in that. So excessive social media use, information overload, peer pressure. So this is, nobody will come to your rescue. The youth has to decide what they want in their life. So they have to, get rid of this addiction. They must allot some time for that. So not definitely, even me, sometimes yielded when I'm very tired and want to sleep, and I see for some messages and all that, and if some video comes there, I click on that, it takes me to a social media platform. Then one after another comes. After some time, losing some time, I realize that then I stop it and see. I'm also struggling. Everybody is struggling. So this has become a curse now, and how youth can manage it, they have to be become saint. Otherwise, they can't control this. Then mental health and motivation, staying balanced, stress, anxiety, burnout. Some students are very sensitive, and you never have to be sensitive. When you have put in your efforts, when you have done your part, leave the result to the God. वो अल्लाह की मर्जी है. आप एग्जाम लिखने के बाद आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कुछ जो भी है, अल्लाह ने डिसाइड करना है. जब तक आप कोशिश करें, मेहनत करें, अपना ड्यूटी सिंसियरिटी से निभाए, मुकम्मल कोशिश करें, जो भी फैसला है अल्लाह का. यू शुड नॉट हैव एंग्जाइटी, यू शुड नॉट हैव टेंशन. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आप. तो दिस इज वेरी डेंजरस. It will kill your mental peace, spoil your health. Okay, so then what is that you have? इससे बाहर आने के लिए now
we need to have some small simple exercises. ऐसा तो नमाज है हमारे लिए 5 वक्त की नमाज. आप जितना भी मुश्किलात में है, परेशानियों में है, आप जब अज़ा होती, आप उठ के चले जाओ, नमाज पढ़ो और है ना, खुदा पे सब छोड़ दो और फिर वापस काम करते जाओ. So we have a gift, a born gift to us. सलाह. तो ये बहुत बड़ी नियामत है खुदा से. तो आप नमाज पे तवज्जो दो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो. तो that itself is a physical and a mental exercise देगा, distraction. आप ये चीजों से बाहर आ सकते हैं, रिलीफ देता आपको. अच्छे हैबिट्स बनाओ. और मेडिटेशन मतलब फिर भी थोड़ा बैठो, कुरान शरीफ पढ़ो, रोज इतना हिसाब रख लो. ये अगर नहीं हो सकता, एक रुकू पढ़ो, एक पेज पढ़ो. ऐसा नहीं कि हर दिन 1-2 पैरा पारा पढ़ना. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ये सिंगल पेज पढ़िए रोजाना और एक रुकू पढ़िए और मतलब भी जानिए. ट्राई टू नो दैट. सो जब यू अंडरस्टैंड व्हाट Allah says to us, Allah speaks to us, and you are not listening to him. If you want to listen to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to read Quran Sharif. Then you will understand. तो आपको वो आपका रूह जो है, आपका माइंड नहीं कर रहा मैं, रूह मैच्योर हो जाता. So then your approach, your discipline, your command, your authority, your confidence will be totally different. You don't care anybody. आप जो भी दुनिया का सबसे जबरदस्त ताकतवर है या पावरफुल मैन है, दौलतमंद है, आपका बास है, आपका कोई दुश्मन है, आपको किसी चीज का डर नहीं रहता जब तक आपका ईमान, ईमानदारी, समझदारी कुरान के रोशनी में बुलंद कर लो. इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन गोल सेटिंग. तो आप यू हैव टू फिक्स शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स. आपको क्या बनना है, किस रूट में जाना है. तो ऑल ऑफ अ सडन यू डोंट बिकम समबडी. You have to travel a long journey sometimes, a very difficult path if you have chosen. Then short-term goals, एक के बाद करते जाना. So then what are your long-term goals? So you must have this clarity first of all. Then you please be careful. So never have vague ambitions. A smart framework, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. इसमें क्या कहना चाहता हूं मैं? By adhering to these criteria, individuals and organizations can create concrete, actionable plans that turn vague aspirations into achievable targets with a clear roadmaps and defined endpoints, making success more likely. This is very important. तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए. You must have very good clarity. Never think that the parents or somebody is deciding. Let them come and advise you, but you too should have your own plan. अगर आपका पेरेंट्स का कहा मानते हैं आप, उसके लिए आपको काम करना पड़ता. तो you have to be mature right from your high school. You cannot be immature. You cannot depend on somebody. पापा ने बोला मैं इसमें ज्वाइन हुआ, माँ ने कहा तो मैं इसमें ज्वाइन हुआ, मैं माँ के लिए कर रहा हूँ, पापा के लिए, भाई के लिए कर रहा हूँ. नो, यू प्लीज. अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप पेरेंट्स का कहा मान रहे, उनका इरादा आप अपना रहे, तो उसके लिए एक प्लान बनाओ और मेक इट सक्सेसफुल. उसमें सवाब भी है और एडवांटेज भी है. तो इसमें क्या करना है आपको? तो आपको जो है यहाँ पे, तो आप शायद देख रहे हैं लास्ट लाइन, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा मैंने वहां पे. प्लीज सीधा मुझे एक मेनू बार ने हाइड कर दिया था. तो इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, हाउ टू स्टडी स्मार्ट. डेली स्टडी रूटीन, एक्टिव लर्निंग, नोट्स बनाओ, समराइजिंग, क्विज़ेस, सेल्फ असेसमेंट एंड रिव्यू. Today's generation is a very fortunate. When I was doing PhD, in our Andhra University library, we had only one journal there.
बहुत मुश्किल से I could identify one paper, general paper, which will be useful for me in a particular journal. I went to university library. I got that journal, and I was, browsing through that book to get my paper in which I'm interested. But I was not able to find it. So when carefully examining, I found that the pages are jumping from 16 to 24, something like that it was going. So जो journal paper मुझे चाहिए था, it was there. Somebody already, cut those papers and take it out. So I didn't have an opportunity to use a single journal for my PhD, which was in a very, very innovative field. That time it was the new field, satellite technology. That there was new era started. I was doing in that. I never had a single journal in the university. Then I used to take the help from IITs and ISRO. वहां से मैं then almost my work was ending. In the last part of my PhD, internet came. So using internet, I could browse many papers that I needed. So 1 month, morning to evening, I was the first person to enter that e-learning lab. I was waiting for the attendant to come open the door, and I was the last person to leave that. Attendant almost was throwing me out. So like that, more than a month I worked. I was, astonished. There is no bound for my happiness. I was on cloud nine. I was able to access to all the international journals. So today you have everything on your mobile. Google is there. So Google is searching. ChatGPT is there. So many things are there for you. But you should always visit the libraries, go through the textbooks. Textbook reading almost vanished from the present generations now. When I ask the book shop owners, they say that nobody is purchasing, sir. So stop long, long ago, not now. The 15 साल के पहला, I used to, regularly go to the bookshops and look for the new editions. तो धीरे 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 books आना बंद हो गया. When I was asking them, they used to say, "Kaun pad raha sir? No student is reading textbooks. No student is reading textbook, and it is another curse to the students. Even today, I read the textbooks. To prepare a lesson, I read not less than 10, sometimes 20 textbooks, uh, to prepare my lessons, even today. When I was a student, I used to spend most of the time in my library only. I never depended on my teacher's lectures alone. उनका lectures लेता था, but I used to go to the library and take all the foreign Asian books, go through them. That built my confidence. मैं आज भी, कल भी था, आज भी ऐसा हूँ. I'm always confident about my knowledge subject. It is only because of my own self-reading. तो आज जमाना और अच्छा हो गया. You have access to anything through the internet. YouTube में lectures है. And अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, you can ask a query in the chat GPT, get the answer. But never blindly depend on them. I have my own experience. Don't believe your chat GPT or any other such a platform, and use it as it is. I'll tell you, recently, I told you already that I'm a consultant. So Food Corporation India, I was working for Food Corporation India, drainage planning where they are having flood problem. तो उसमें रोड डिजाइन भी था, तो मैंने रोड डिजाइन कर दिया. चुपके से मेरे दिल में ख्याल आया कि अरे ChatGPT is providing everything. Let me see how this ChatGPT will design the concrete road which I have done. तो मैंने उसको पूछा, डेटा दे दिया, asked the ChatGPT to design it. So it was excellent presentation the ChatGPT gave me. I was very happy. It was using all the codes, everything. Everything is very perfect. Yet I did not believe it because the final
drawings, everything that gave is very much reasonable and acceptable. Because of my experience, I can tell that. But yet I did not believe it. I was going through each and every step, calculations also. And I found that one calculation, I found answer 60 के आसपास आना correct. One particular answer should be 60. तो उसने वो calculations में formula में what is that inputs it got and I was doing, root of a certain value will not come, is coming about 10, but it was showing 60. Why it was showing 60? Because 60 अगर नहीं आया तो design mess up हो जाता. And ChatGPT knows that answer should be 60. So it ignored the actual outcome of that calculation from the equation, and it printed 60 there. So see, it is like some students manipulate the answers. It is doing like a student, a human being. मेरे lab में, मेरे exams में, it is very common that some students try to manipulate. They know the answer. Sometimes they don't get in the practical classes the proper answer. So इधर उधर कुछ ना ये वो लगा के फाइनल आंसर बता देते. तो इसमें मुझे एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने देखा तो ChatGPT was cheating me. So if anybody is doubting and thinking that I'm exaggerating that, I can send you those papers to you. You can check yourself. So don't depend on them blindly. आपका अपना हमेशा प्रिपरेशन होना और आपका डिसीजन होना चाहिए. You should not come under their control. You should be, okay, keep them under your control. So e-learning platforms, academic YouTube channels are there, and artificial intelligence powered research and learning tools are there. You can effectively use them. And the documentaries are there, so you can use them. But never neglect your teacher. Okay, so also consult your teacher unless until you have problem with his knowledge or with him. Okay, so building a support network, so mentorship from teachers, professionals, peer study groups, seminars, workshop, conferences, you must attend. I see today a PhD Viva is going on. Earlier the hall was crowded, used to be crowded. Now hardly the PhD candidate, the guide, and only board of studies head of the department, and one or two his friends. That's all. Whether it is MTech project presentation, PhD defense, or a seminar. We call sometimes expert. Sometimes they come from other countries. We arrange a lecture. We have to like a political meetings. आप जानते हैं political meetings में जब नेताजी आते हैं तो लोगों को हायर करके लारी में बस में चढ़ा के उनको फूड पैकेट 500 रुपए दे के बिठाते हैं. Now university has become like that. So to fill the hall, we're bringing a first year student, second year student to fill the hall who are not at all connected to that advanced research topic. They don't have any ability to understand. तो ये हालत होगी अब यूनिवर्सिटीज की. So this is very bad, a very bad sign. So I advise my students, youngsters, to please be serious. Whenever an opportunity comes, attend seminars, workshop, conferences. Because एक senior professor ने मुझसे कहा था, so when I was very young, Vazeer, we never leave an opportunity to attend anybody's PhD defense. IS Bangalore is there, na? In IS Bangalore, if any professor sees that there is a PhD defense going in the seminar hall, irrespective of the department subject, they will immediately go and sit there. मैंने पूछा था इसके बारे में, तो प्रोफेसर ने कहा, see, that fellow has spent 5 years of his lifetime, and he is giving the essence of his outcome in 1 hour or 2 hours. And we are fortunate to know his 5 years studies outcome in half an hour or 1 hour. So we don't want to miss the opportunity.
So please keep this point in your mind. Keep listening to others. जब घर में बड़े कहते हैं कुछ बता रहे हैं तो सीखो. छोटे छोटे चीजों से घर में सीखना है और बाहर भी सीखना है और यूनिवर्सिटी में भी सीखना है. तो वर्क स्टडी एंड लाइफ इसको बैलेंस करना है. प्रायोरिटाइज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. मैंने कहा ना एक्सरसाइजेस और सबसे बड़ी नियामत है नमाज हमारे लिए. तो नमाज पढ़ो और ऑटोमेटिकली आपके आदतें अच्छे हो जाते हैं. आप नो हैबिट्स अच्छे हो जाते हैं. तो एंगेज इन हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आल्सो. सो वह कहा ना ऑलरेडी होलिस्टिक ग्रोथ. दैट्स वेरी. So role of youth in nation building, innovation, social change, contribution to technology and society, lead communities responsibly. The future of the nation is always in the hands of the youth. अगर आपको बाहर जाके सीखना है, जाओ सीखो, come back. When Gandhi, Nehru, Sardar Patel, all जो people है ना, when they went London and studied there, they understood the importance of the human life, freedom. Then they came back and fought with the British government. उसने बीज डाला था फ्रीडम के लिए. सो मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसने IITs ने स्टार्ट किया, who made education the right for every citizen. जो भी आपने देखा जिला परिषद स्कूल, म्युनिसिपल स्कूल, वो जमाने में मौलाना अबुल आजाद के मिशन था. IITs उनका मिशन था. सो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मौलाना अबुल कलाम आजाद है ना, अपना बचपन का स्टडी पूरा घर पे हुआ. उन्होंने कभी भी स्कूल नहीं गया. He never went to school. He always studied at home only. But you know, he became education minister. 16 साल के एज में 60 साल का मेच्योरिटी, नॉलेज दिखता है बोल के सरोजिनी नायडू, यू नो, यूज्ड टू अप्रिशिएट नॉलेज. नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ पे पढ़े आप वो नहीं मतलब. नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मौलाना अबुल कलाम आजाद का आप स्टोरी पढ़ो, बायोग्राफी, यू नो दैट्स इनफ फॉर यू टू चेंज योर लाइफ. ये मॉडर्न एजुकेशन के बारे में. तो इंटरेक्टिव, आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. आई एम हियर टू. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, जस्ट डोंट एम टू पास फॉर एग्जाम्स. एम टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ लीडर एंड एन इनोवेटर. जो भी फील्ड है, जैसा भी है, you can become a leader. So reinforce always long-term mindset. So upskill continuously. ऐसा नहीं कि आप डिग्री लेने तक, जॉब आने तक, इंडस्ट्री स्टार्ट करने तक पढ़ना, बाद में नहीं. Life long, you have to, whenever the opportunity comes, please learn. Not for the sake of getting degrees, for the sake of learning, upskilling yourself. Always be ready to embrace challenges as opportunities. क्राइसिस आया, मैनेज, हैंडल द क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी. सो लाइफ सिखाएगा आपको. मैंने कहा आपको कई दिक्कत होंगे इन फ्यूचर, बट आपका कॉन्फिडेंस विल मेक यू ऑलवेज गो थ्रू दैट हार्ड टाइम्स एंड कम आउट सक्सेसफुल. इसीलिए आपको एंड्योरेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए. आपको सब्र होना चाहिए. ये भी हमारे दीन से मिलता है, इसके बारे में भी सब्र. ओके. तो strive for knowledge, excellent knowledge, ethics, hard works brings us success, मुकम्मल success only from knowledge, ethics and hard. अकेला नॉलेज नहीं देता है, अकेला हार्ड वर्क नहीं देता. नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ एथिक्स से, वो अकेला नहीं देता. यू नीड ऑल दिस थिंग्स. बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स. एंड देखिए, दुआ कर लीजिए, वकुर रब्बी जिदनी इल्म. तो माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज. तो ये है हमारा दीन. तो सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए थोड़ा मैं आपको बताऊंगा. APJ अबुल कलाम आपके जिंदगी में देखे हैं इनके. ही वॉज अ वेरी मीडियोकर मैन. ही वांटेड टू बिकम एरोनॉटिकल इंजीनियर, बट ही कुड नॉट गेट a seat. But his humble beginning, okay, made him a scientist. He was not a very intelligent man. He was a mediocre, we call him. Okay, above average.
but his hard work made him a missile man. His commitment, dedication made him. See, not only just becoming a scientist and retiring in a good position. You know, the knowledge, the character, you know, the reputation made him the president of India. After becoming president of India, he is a क्या बोलते हैं उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था. क्यों? ही वांटेड टू बिकम अ पायलट विच ही कुड नेवर बिकम. तो वो रह गया था उनके दिमाग में, पायलट नहीं बना, पायलट नहीं बन पाया. तो आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट द एंटायर डिफेंस विल बी अंडर हिज कंट्रोल ना. तो ही कॉल्ड एयर चीफ मार्शल. ही टोल्ड हिम, आस्क्ड हिम टू train him as a pilot. So at that age, he got trained as a pilot, and he became pilot at least for one time, and he fulfilled his ambition. तो ये ऐसा कुछ हम ले सकते हैं उनसे. तो it is not that everybody has to become Kala and as reputed as Kalam. No, अपना अपना महल्ले में, अपना जिंदगी में, अपना फैमिली में, अपना ऑफिस में, you can become a reputed man, a reputed person. That's enough. और आप भी you can अगर हमारा इस्लामिक एज, गोल्डन इस्लामिक एज कहते हैं, तो आप इस हिस्ट्री से ये भी कहानियां उठा सकते हैं. आप रियल स्टोरी से. व्हाट इज द मॉडर्न साइंस दैट वी हैव टुडे हियर? द मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन कौन डाला? हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने डाला. अल ख्वारिज़मी, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर. आपका जो अलजेब्रा बोलते हैं ना, अलजबर, तो उन्होंने स्टार्ट किया. डेवलप अलगारिदम्स, अलगारिदम जो भी बोलते हैं ना आप, अलगारिदम्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया. हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 10, ये हिंदुस्तान में था. इसको दुनिया को प्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करे सो अरबियंस. सो दे आर नोन एज अरेबिक न्यूमरल, बट एक्चुअली दे आर हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहा भी जा सकता है. तो जीरो ने इंडियंस ने एक इंट्रोड्यूस किया था, तो दैट वाज इंट्रोड्यूस. तो जो भी पुराना साइंस था, वर्ल्ड को, आज का वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया था अरेबियंस. तो द काइंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस. बाद में इब्न सीना, तो उन्होंने मेडिसिन में, ओके, आज भी है उनका बुक. तो देन अल राजी, फिजिशियन केमिस्ट, अल फराबी. ऐसे दिस इज ओनली फ्यू. आई हैव वेरी बिग बुक ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट. बहुत बड़ा बुक है मेरे पास. तो लाइक दैट यू कैन टेक अल बिरूनी, स्कॉलर, एस्ट्रोनॉमर. यू नो द वर्ल्ड मैप जो भी बना हुआ है ना, जो मैप्स है. सी, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट स्विगी, विदाउट ब्लिंकिट, विदाउट उबर, विदाउट मोबाइल जीपीएस? ये सब किस पे डिपेंड होके है? एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी से सर्वे, सर्वे से मैप, वर्ल्ड मैप. तो it was the Arabians who developed that map. जो भी वो, उसका जो भी सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ. उसके बाद मॉडर्न ए में लिए तो यू कैन सी अल्बर्ट साइंटिस्ट, क्यूरी, सो मेनी आर देयर, स्टीफन हॉकिंग, हॉकिंग. बाद में जो है टेस्ला और फ्रैंकलिन. अब इफ यू टेक स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना खुद का एक है, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, एलन मस्क. व्हाई आई एम शोइंग दिस अगेन टू यू? दो वी सी इन द गोल्डन इस्लामिक एज यू हैव ओनली मुस्लिम्स, बट आज का एज में देखे तो यू हार्डली फाइंड एनी मुस्लिम इन दैट लॉन्ग लिस्ट. नोबल लॉरेट्स कितने हैं मुसलमान आज का? यू नो, यहूदियों ने, इजरायलियों ने कहा कि अब वेयर आर द मुस्लिम्स इन दिस नोबल लॉरेट्स लिस्ट? कितने हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ नोबल प्राइजेस जो है यहूदियों को जा रहा, इजरायली को जा रहा. तो एक बेवकूफी बात क्या है, जो भी ये आज का मॉडर्न साइंस है,
It all developed on the foundation created by Muslims only. तो आप जानो कितना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So we have to restore this reputation. We have to come back. We have to show our talent. तो ये जिम्मेदारी आपका जनरेशन में आने वाले जनरेशन पे है. That's why I have shown this list to you, though it is very short. So with this, I would end my discussion with you all. I hope that I have not bored you much. थोड़ा सा बोरिंग हो सकता, पर ज्यादा बोरिंग करा बोल के मैं समझ. So thank you very much once again, the organizers, and I hope the youngsters who listen to me take some inspiration or motivation from my lecture and realize their responsibility and adopt the ईमानदारी, समझदारी और मेहनत, सब्र, ये चीज. थैंक यू वेरी मच साला. जी, जज़ाकल्लाह खैरन सर. तो अब हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट होने वाला है 5 मिनट्स का. जी. जो भी क्वेश्चंस है आप कर सकते हैं. कुछ जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए तो भी पूछ सकते हैं. Because I cannot see the audience, what is their background, उनको क्या जरूरत है, अब वो तो मुझे पता नहीं. So जनरल क्वेश्चन से एजुकेशन के बारे में पूछना हो तो भी पूछ सकता है. आप एटलीस्ट कह सकते हैं एक एक सब आपका है ना लेक्चर अच्छा है बोल सकते, नहीं बोर हो गया, आप ये नहीं बोलना था, ऐसा बोलना था. दैट आल्सो यू कैन डिस्कस. बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम ए कंटिन्यूअस लर्नर. आई वांट टू लर्न इट. प्लीज इंटरेक्ट. क्वेश्चन. वालेकुम सलाम. जी मेरा नाम उस्मान, मैं थोड़ा आवाज ज्यादा बढ़ाना. जी मेरा नाम उस्मान, मैं पलनाडु डिस्ट्रिक्ट से बात करता हूँ. पलनाडु डिस्ट्रिक्ट, अच्छी बात. जी जी बोलिए. ये ओपन मतलब रेगुलर डिग्री एंड ओपन डिग्री, ये दोनों के बीच में करियर कैसे रहता, थोड़ा आपके जहन से समझाइए. मतलब डिग्री एक कॉलेज में डिग्री पढ़ने का और ओपन यूनिवर्सिटी से मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस लेने का, ये ना योर क्वेश्चन. हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी से और डिग्री पाए तो वो दोनों के बीच में करियर कैसे रहता. करियर इम्पोर्टेंस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस डिग्री. हाँ. अब एक्चुअली नो मैं पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी आपको बता देता हूँ. वेदर यू कॉल इट ए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या ओपन यूनिवर्सिटी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है. एवरीबडी कांट रीच ए कॉलेज, है ना, फॉर सम रीजंस. तो उनके लिए एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी देना बोल के ओपन यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ. ओके. अब करियर के बारे में टू थिंग्स आर देयर. सपोज आप एक डिग्री हासिल करें ओपन यूनिवर्सिटी से, एक्सपेक्टिंग एंड विथ एस्पायरिंग सम गुड पोजीशन, कहीं पे डिपार्टमेंट में एक पोजीशन के लिए आपने डिग्री हासिल किया और आपने इंटरव्यू को गया. ओके, आई एम टेलिंग इन दैट वे, एग्जाम्पलीफाइंग दैट वे. तो वहां पे somebody is there from who studied regularly in a university, वो डिग्री होल्डर भी है, आप भी है. तो वो इंटरव्यू करने वाला नॉर्मली विल प्रिफर द रेगुलर डिग्री कोर्स वाला जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, उसको प्रिफर करता हूँ. ओके, मगर इट डजंट मीन दैट ऑलवेज बाय डिफॉल्ट उसको प्रिफर करा और कोई भी बंदा आया ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्री लेके उसको नहीं. He will also check the ability, knowledge, क्योंकि अपना ओन एक्सपीरियंस है हमारा. ओके, अगर बंदा जो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ा है, he is not able to impress there, and the open यूनिवर्सिटी वाला impress अच्छा कर रहा, उसमें मतलब जो भी उसका नॉलेज है या कुछ भी है, उसका अप्रोच है, उसका क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन ऐसा है कि कॉन्फिडेंस से
उस जो इंटरव्यू कर रहा उसको कॉन्फिडेंस लाना। तो ये सही है, ये अच्छा काम करेगा, इससे मेरा काम अच्छा होगा। तो दे प्रिफर इवन इफ यू आर फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, तो थैंक यू सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी देर आर सो मेनी जी एम्प्लॉइज है, मेरे टीचर्स में भी थे, उन लोग जो है ना ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ के, प्राइवेट स्टडीज करके, प्राइवेट एग्जाम दे के, बाद में करस्पॉन्डेंस में करके, they become lecturers also when I was studying intermediate. Okay? ओके सर, ओके, Okay. थैंक Right. जी, और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जो अस्सलाम ये रहमतुल्लाह। दौर के अंदर है ना, जी जी हमारे ये दौर के अंदर जो भी स्टूडेंट्स है जी जी जी। अर्ली सेटलमेंट का प्लान करने वाले बनते हैं, जैसे हायर हाँ एजुकेशन हाँ की सोच नहीं रहती है, ये हाँ डिप्लोमा कर लिए या बीटेक। हाँ हाँ तो जी। हायर एजुकेशन के तरफ उनको हमें किस तरह हमें मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह हम आगे बढ़ने के लिए उनको प्लानिंग कर सकते हैं कुछ। प्लान मोटिवेशन तो क्या है अब, जैसा कि डिप्लोमा करे, अब इंजीनियरिंग में अगर लिए तो आप थोड़े लोग पॉलिटेक्निक को चले आते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद जो है गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एनकरेजिंग देम, अगर बीटेक में ज्वाइन हो तो 3 साल पढ़े तो बस होगा, 3 years इन। और अब जो प्रेजेंट जनरेशन में, हु आर माय पेट स्टूडेंट्स इन द क्लास, all the students who are coming after diploma, because they are doing the best compared to other students who have done intermediate and came to university through MSET. Okay, and these students came through diploma. They lack in communication. Okay, their parents' educational background is not good. They are from a lower background. In fact, I must say like that also, because उनका जो financial background है is not that sound. Yet, because their performance, we professors are so impressed with them. Invariably, all the professors are very happy with the diploma students. Our first favorite students में first list में आने वाले diploma वाले, because those people are with a hard work, commitment, and with a great ambition. So अब ये, this is, I think this point is enough for the diploma people to aspire for higher education, है ना? And वो हायर एजुकेशन का तो आपको एडवांटेज कैसा भी है वो जानते हैं एवरीबॉडी, इज वेरी एसेंशियल टुडे। पहले जमाने में डिप्लोमा कैसा स्टार्ट किया गया, देन वर्ल्ड वार्स आर हैपनिंग, वो इमीडिएट रिक्रूटमेंट के लिए फटाफट इंजीनियरिंग के 2-4 चुना दो और उनको इंजीनियरिंग में डाल दो। वार्स में क्या है, इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेंट्री बटालियन बोलते हैं, वो लोग फर्स्ट ट्रूप टू लीड ऑन द ग्राउंड, उनके लिए ब्रिजेस बनना रहता, ओके, व्हीकल्स का रिपेयर करना पड़ता। इंजीनियरिंग इज वेरी मच इन्वॉल्व, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो उसलिए दे कुड नॉट वेट फॉर द पीपल टू डू, दोज डेज 5.5 years 6 years इंजीनियरिंग था, तो जल्दी जल्दी उनको है ना बेसिक्स समझा के लेने के लिए करे थे। वो कंटिन्यू हुआ था ब्रिटिश के जमाने में, बाद में भी कंटिन्यू हुआ। जब व्हेन जवाहरलाल नेहरू स्टार्टेड वेरियस प्रोजेक्ट्स, डैम्स कंस्ट्रक्शन हो, तो डिप्लोमा वाले को फटाफट ले लेते थे, बिकॉज 3 साल के अंदर आफ्टर 10th दे फिनिश 3 years दे कम। तो डिप्लोमा थोड़े सर्कमस्टेंस में स्टार्ट किया, थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से। बट आज डिप्लोमा इज नॉट इनफ, दे हैव टू डू हायर एजुकेशन। दिस इज माय सिंसियर appeal to all the diploma holders to go for higher education. I hope answer your question. जी सर, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Sir, I'm a student of sir. थोड़ा वॉइस कट हो रहा बा, थोड़ा आवाज से बोलो। सर मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बात कर रहा हूँ सर, कौन सा इंटर फर्स्ट यूनिवर्सिटी? ईयर। ट्रिपल आरजीओ यूनिवर्सिटी सर, आरजीओ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जी जी, हाँ। हाँ, ट्रिपल अभी कौन से ईयर फर्स्ट में ईयर है सर तुम? मैं अब। हाँ, फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सर। ईयर बीटेक है? फर्स्ट ईयर बीटेक? नहीं नहीं, पीयूसी सर, प्री यूनिवर्सिटी को अच्छा, फर्स्ट पीयूसी ईयर, में है वे, पीयूसी अभी 1। दाखिला लिए। ओके राइट, हाँ। हाँ कौन सा? हाँ नूजीवीड है? हाँ। कहाँ 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 का मैं ये? कहाँ? न्यूजीवीड सर, न्यूजीवीड। नूजीवीड, अच्छी बात, ठीक है, बोलो। न्यूजीवीड सर। हाँ, जी, हाँ बोलो। न्यूजीवीड। हो जा। ओ सर, ये भी का अच्छा क्या सर, ये ट्रिपल डी है का भी मैं क्या कंटिन्यू कर बहुत सकता अच्छा हूँ है। क्या सर, बीटेक? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। ओके। हाँ देखिए, एक बात सर। मैं आपको सबको बताऊंगा, आपके जरिए आपका क्वेश्चन का सहारा लेके एक बात बताऊंगा। सी, फॉर एवरीवन नॉट पॉसिबल टू गो टू आईआईटी, क्योंकि पॉपुलेशन कितना है, बच्चे कितने हैं, आईआईटी में सीट्स कितने हैं। ओके, फॉर एवरीवन इज नॉट पॉसिबल टू गो टू स्टेट यूनिवर्सिटीज। मगर जहां भी आपको मिला, irrespective of college, irrespective of your status of university, you have every opportunity to excel there. ये भूल जाओ। Once you join in an institute, आपको जस्ट एक बात मानना है कि मैं इसमें बन के बताऊंगा, मुझे बनना है बस। घर में पॉइंट ओके है, यस सर। आपको सिर्फ कुछ यस बनना सर। है। 10 साल, नो फॉरगेट वो आज ही यूकेटी है या आंध्र यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, भूल जाओ इसके बारे में। ओके, आप चाहे तो आप कुछ भी बन सकते हैं। वो हुआ है, प्रूफ है मेरे पास। ओके, मेरे पास प्रूफ है। ओके ओके, हाँ, बस बनते जाओ। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। और जी, और कुछ सवालत थे तो करिए। 2 मिनट का वक्त है। और कुछ नहीं तो कंक्लूडिंग की तरफ आगे बढ़िए। अच्छा, पहला आप कंक्लूड करने के पहला एक बात मुझे बोलना है। आई वांट टू जी अपोलोजाइज सर। बिकॉज फॉर माय लेट अराइवल। रीजन जो भी है, I profusely apologize to you all for waiting you, kept you waiting for more than half an नहीं सर, होता रहता है कभी कभी। hour. शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। जी सर, कंक्लूडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे सर अभी। और जी, किसको जी कंक्लूड करना है बे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। आप कर मैं ही दे रहे बता हैं? देता जी, हूँ। कर दे कर दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ अभी। फ्रेमिंग अकाडमी जो नोड है ऐसे वो इंडिया का, तो ऐसे वो आंध्र प्रदेश ये नोड लेते हुए हायर एजुकेशन और एकेडमिक एक्सेलेंस पे, तो इस विकास का ये पहला भी कंटिन्यू रहेगा इसी इंशाल्लाह। ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स पर, और हिस्ट्री पर रहेगा, पॉलिटिकल साइंस पर भी रहेगा, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जी जी, और साइकोलॉजी पे। तो ये जो मेन मेन डोमेन्स है, इसके ऊपर फ्रेमिंग अकाडमिया का सीरीज कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जो भी सर अभी बताए थे पीपीटी के अंदर, जो आज का दौर का डिजिटल वर्ल्ड का क्या हाल है बोल के, तो वो चीज़ों पे भी नज़र रखते हुए एसआईओ आंध्र प्रदेश एक कैंपेन भी रन करी थी, वो मोरालिटी और डिजिटल एथिक्स के ऊपर।
तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट वाइड कैंपेन था वो, ऑलमोस्ट कैंपसेस कवर करके स्कूल्स और कॉलेजेस विजिट करके हम भी सेमिनार्स दिए थे, मोरल्स पर और डिजिटल एथिक्स पर, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन को किस तरह हमें स्टेबल से रख के आगे बढ़ना है एकेडमिक में। तो ये चंद चीज़ें अच्छी तरह से हमें फॉलो होके एसआई आंध्र प्रदेश के तरफ से करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला हमारे जो भी एफर्ट्स है कबूल करेंगे इंशाल्लाह। तो आमीन। ये सेशन को एंड करने के लिए मैं दुआ के साथ एंड करने के लिए दावत देता हूँ अमीर यहिया खान, आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एसआई आंध्र प्रदेश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैरन। जी जी यहाँ से हमारा ये ऑनलाइन मीट एंड होता है। तो फिर जी अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफिज। खैरन। जी सर। अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।